Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 11. The name of the paper is Morphology and Syntax. The chapter is Morphology and the subtopic is Compounding. This lecture is specifically for the students of BS English third semester GDC PABI and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. Compounding is our topic, and this compounding is a technique which can create a lot of words. It is a common technique for word building, and it is very productive because it can create unlimited number of words. So it is called a productive method or technique of making words or building words. By compounding, we mean to combine two already existing words, and the result often is either a noun or a verb or an adjective. Um, Sometimes we can use uh, prepositions in compounding, and the possible examples of compound prepositions often include into and onto. They are not important. Important are the nouns, the verbs, and the adjectives. Compounding means the combination of two already existing words. If we take these examples, for example, um, we have fire and engine combined together, they make one word, fire engine, which is a noun. Fire itself is a noun. So, two noun giving you another noun. Oil well, tel ka kuan, as it is called. This is noun, this is another noun, and a compound is created, which is again a noun. This noun is a combination of the adjective and noun. Greenhouse and bluebird. This noun is a combination of verb and noun. Scrub nurse and jumpsuit. This noun is a combination of preposition and noun, afterthought, or in-laws. So these all were the examples and tree diagrams of nouns. You should make these tree diagrams. They're important. These are the compounds which make and create verbs. For example, you have a noun spoon combined with the verb feet, giving you the verb spoon feet, or steamroll, or whitewash, or dry clean. White is an adjective combined with verb, and here we have a preposition combined with verb, giving you verb overlook, underestimate, and two verbs combined together making one verb, dropkick and break dance. These are the examples of adjective compounds. A noun combined with an adjective is making an adjective, nationwide, sky blue. Adjective combined with adjective making another adjective, red hot, blue green. An adjective is made by combining preposition and adjective, overripe and ingrown. So these are the different types of compounds which are created: the verb compounds, adjective compounds, and noun compounds. The important thing to note here is that the rightmost morpheme, for example, in spoon feed, feed is the rightmost; in steamroll, roll is the rightmost. These rightmost morphemes, they actually decide which category the word should belong to. So therefore, in nationwide, though it is the first word is nation, the second is an adjective, but the second one will decide which category it should belong to. Wide is adjective, therefore the word should be adjective. A heart is adjective, therefore the word should be adjective. In these cases, wash is a verb, therefore the total word should be verb, and the same is the case with all these. So the rightmost morpheme actually determines the category. um, Therefore, bluebird, for example, bird is a noun, therefore it would be a noun. In spoon feed, feed is a verb because spoon feed is a verb because it ends with feet, and which is a verb. In nationwide, nation is a noun, wide is an adjective, therefore it is an adjective. Right mode, most is deciding which category it belongs to, and this rightmost, which decides the category, is referred to as the head of the word.
Compounds can be combined with other words. For example, uh, we have dog food as a compound. It can be combined with box, and the word formed is dog food box. It can also be combined with concert series, making Saturday night concert series. So it can be combined with other words. It compounding also can interact with derivation. So it can combine with derivative word. For example, combining elect and shun gives you election, which is actually a derivation from elect. Elect is a verb. Shun is combined with it. Election becomes a noun. And when you combine date with it, then it becomes a compound. So it has something to do with the derivations as well. And we say it is inexhaustible source of new words in English because a lot of words can be created, new words, with the help of this process. Now you can listen to it in Urdu as well. Compounding हमने पढ़ा. Compounding जो है ये अल्फाज को बनाने का एक प्रोडक्टिव तरीका है और इसमें दो वर्ड्स को कंबाइन किया जाता है. जो रिजल्ट निकलता है नाउन या वर्ब या एडजेक्टिव की शक्ल में हो सकता है. कभी कभार प्रीपोजिशन को भी इनमें इस्तेमाल किया जाता है. ये नाउन कंपाउंड्स है जिसको हमने डिस्कस किया. ये वर्ब कंपाउंड है और ये एडजेक्टिव कंपाउंड है. और हमने इसमें ये भी बात पढ़ी कि जो राइट साइड वाला होगा उसी से कैटेगरी का पता चलेगा. तो यहाँ पे राइट साइड चूंकि इंजन है और वो नाउन है तो ये पूरा नाउन होगा. यहाँ राइट साइड वाला नाउन है तो पूरा नाउन होगा. यहाँ राइट साइड वाला वर्ब है तो पूरा वर्ब होगा. यहाँ राइट साइड वाला एडजेक्टिव है तो पूरा एडजेक्टिव होगा. तो ये डिसाइड करेगा कि कौन सा है और जो डिसाइड करेगा उसी को हेड कहा जाता है. इसी तरह आपने कहा कि कंपाउंड जो है ये दूसरे अल्फाजों के साथ भी मिल सकता है. मसलन डॉग फूड कंपाउंड है, बॉक्स के साथ मिलता है तो डॉग फूड बॉक्स बनेगा. संडे नाइट कंपाउंड है, ये दूसरे वर्ड के साथ मिलेगा. कंसर्ट सीरीज जो कि खुद कंपाउंड है और इससे नेक्स्ट कंपाउंड बढ़ेगा संडे नाइट कंसर्ट सीरीज. इसी तरीके से हमने कहा कि ये डेरिवेशन के साथ इंटरेक्ट करता है. इलेक्ट और शन आपस में मिलकर इलेक्शन बनाते हैं. ये डेरिवेशनल मॉर्फीम है ION और ये वर्ब से नाउन बना रहा है. इस डेरिवेशन के साथ साथ हम डेट लगा सकते हैं. तो ये एक नाउन दूसरे नाउन के साथ मिलके नाउन प्रोड्यूस कर रहा है और ये एक ना खत्म होने वाला तरीक़ेकार है नाउन को वर्ड्स को प्रोड्यूस करने का. इसको रीड करते हैं. अनदर कॉमन टेक्निक, दूसरा आम टेक्निक फॉर वर्ड बिल्डिंग, अल्फाज बनाने के लिए इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स कंपाउंडिंग. इसमें कंपाउंडिंग है. दी कम्बिनेशन ऑफ टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड्स, जो असल में दो पहले से मौजूद अल्फाज का कम्बिनेशन है. विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, बहुत कम इसमें मुस्तस्ना केसेस हैं. अक्सरियत द रिजल्टिंग कंपाउंड वर्ड इज अ नाउन, अ वर्ब और एन एडजेक्टिव. अक्सरियत ये तीन होते हैं. एक्सेप्शंस हैं बड़े कम है. पॉसिबल एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड प्रीपोजिशंस इंक्लूड द वर्ड्स इनटू एंड ऑनटू. अगर कंपाउंड प्रीपोजिशन का है तो फिर उसके साथ इनटू और ऑनटू आता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं. यहाँ ये एग्जांपल्स हैं नाउन कंपाउंड्स के, ये वर्ब कंपाउंड्स के, ये एडजेक्टिव कंपाउंड्स के. ये डायग्राम आपने बनाने हैं और ये इंपॉर्टेंट है. इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंग्लिश कंपाउंड, सबसे जो आम किस्म है, द राइट मोस्ट मॉर्फीम डिटरमिन्स द कैटेगरी ऑफ द इंटायर वर्ड. जो राइट साइड को होगा वही डिटरमिन करेगा कि ये कौन सी कैटेगरी का है, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव. नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब. Thus blue bird is a noun because its rightmost component is a noun. क्योंकि rightmost component इसका bird है और वो noun है. Spoon feed is a verb because feed also belongs to this category, and nationwide is an adjective just as wide is, क्योंकि wide भी adjective है. The morpheme that determines the category of the entire word, ऐसा morpheme जो इसकी category को determine करे, is called the head. तो फिर उसको हम ऐड करेंगे. Once formed, जब ये कंपाउंड्स बन जाते हैं, कंपाउंड्स कैन बी कंबाइंड विद अदर वर्ड्स. तो ये दूसरे अल्फाज के साथ मिल सकते हैं टू क्रिएट स्टिल लार्जर कंपाउंड्स.
और ये एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं एज द एग्जाम्पल्स इन फिगर 4.10। इसमें डॉग फूड ये एक वर्ड है और ये दूसरे ये कंपाउंड है और ये दूसरे वर्ड बॉक्स के साथ मिला है। संडे नाइट एक कंपाउंड है, ये दूसरे कंपाउंड कॉन्सेप्ट सीरीज के साथ मिला है। इन एडिशन इसके अलावा कंपाउंडिंग कैन इंटरेक्ट विद डेरिवेशन, कंपाउंडिंग डेरिवेशन के साथ भी ताल्लुक कर सकता है। यील्डिंग फॉर्म्स सच एज इलेक्शन डेट और इस किस्म के अल्फाज आपको बन के मिलते हैं in which the first word in the compound is the result of derivation. elect और शन इलेक्शन ये डेरिवेशन का प्रोडक्ट है एज शोन इन 4 पॉइंट जैसे ऐसे में बताया गया है। कंपाउंडिंग इन एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ न्यू वर्ड्स इन इंग्लिश, और यहाँ तक बस है, ये बाकी भी एग्जांपल्स हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट कंपाउंडिंग। थैंक यू एंड गुड लक।